Hello, everyone. Welcome to Magical Learners Hub. Today, I have come up with a new topic: multilingualism, your brain's ultimate workout. Perhaps you are habituated to go to gym, to stretch your muscles and look healthy, to manage your muscles and get energy. But do you know there is an exercise for the mind? There's an exercise for criticality and creative thinking. That exercise is multilingualism. And in today's video, we'll be learning more about multilingualism, the benefits of multilingualism, and the way or processes of gaining multilingualism. And the most important thing in this lesson is I'll be incorporating multiple languages: Hindi, Nepali, and English in my presentation. So, watch it entirely and get the confusions solved. आजको भिडियोमा म तपाईहरूलाई बहुभाषिकता बहुभाषिकतामा हामीलाई हुने फाइदाहरू र बहुभाषिकतामा निपुणता ल्याउनको लागि हामीहरूले गर्ने प्रयासहरू सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुभाषिकता के सिद्धांतों और इसके फायदे और बहुभाषिकता में होने वाले फायदे के बारे में आपको बताऊंगा। First of all, there are theories of multilingualism. Based on multilingualism, the theories have emerged. There are universal grammar theory, interlanguage input hypothesis, affordance theory, and translanguaging. So firstly, I'll be giving the time to universal grammar. What universal grammar says? A universal grammar tells about the acquisition of language acquisition device by a person when he or she takes birth. जब कुनै व्यक्ति जन्मिन्छ उसले भाषा सिक्ने एउटा चाहिँ डिभाइस अथवा उपकरण ल्याएर आएको हुन्छ। चाहे त्यो व्यक्ति अमेरिकामा जन्मोस् या नेपालमा जन्मोस् या इन्डियामा जन्मोस् र मान्छेले भाषा सिक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यूनिवर्सल ग्रामरले भन्छ। यूनिवर्सल ग्रामर के अनुसार जब आदमी पैदा होता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके आता है और इसको प्रयोग करके वो भाषा सीख सकता है, चाहे जो कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे चाइनीज हो, उस व्यक्ति में भाषा सीखने की क्षमताएं होती है। और निश्चित उम्र में और उम्र में वो भाषा सीख सकता है। And the second principle is interlanguage. Interlanguage principle talks about the similarity and differences as well as the absence of the languages which is available and not available. As for example, we can talk the similarity found in Nepali and Hindi language. The similarity in script can make us learn Hindi language very well, and the Nepali language also can be learned well by the Hindi speaker because there are the similarities in script and words, this whole thing. But in contrast, or on the other hand, if there are the differences and distinction between languages, it can take time, but it's not said that it will not be learned. इसको मतलब यो हो कि यदि भाषामा समानता भयो भने भाषा सिक्न सजिलो हुन्छ
तर असमानता भयो भने सिक्न टाइम लाग्छ, सिक्नै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। इसका मतलब यह है कि अगर भाषा में भाषा में समानताएं हैं तो भाषा जल्दी सीखी जा सकती है। विभिन्नताएं होने के बावजूद भी भाषा सीखी जा सकती है, मगर ढिलाई और थोड़ा देर लग सकता है। Input hypothesis talks about providing a lot of input or comprehensive output input to the learners. Comprehensive output provides the room for learning, and if we are exposed to that, there will be high chances of learning. So it basically depends on teaching the students or providing them ample opportunities. That opportunity or those opportunities just to push that learner to get interested in learning. इनपुट हाइपोथेसिसको अनुसार हामीहरूले विद्यार्थीलाई अथवा सिकारुलाई प्रशस्त सिक्ने मौकाहरू अथवा धरातल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो धरातलमा अवसर दियो भने सिकारुहरू सिक्न सक्छन्। इसका मतलब यह है कि अगर हम सिकारू को बहुत सारे अवसर दें और सीखने के लिए प्रोत्साहन दें और उसको उत्तेजित करें तो आदमी सीख सकता है। एफोर्डेंस थियरी talks about the ability of learning. So ability depends on level, age, context, and these all things. And it also is determined on the economic power of the person, whether he will be or she will be able to afford or not. So this is based on English language. Let's see an example of English language. If you are going to a new place and you are going to learn language, but you cannot pay the fee, you cannot go to the class, you have a lot of restrictions, you don't have time. So this type of things hinder you, stop you learn language. So it must be associated with your affordance. इसका मतलब यह है कि अगर हम भाषा सीखने के काबिल हैं, चाहे हम दौलत की तरफ से और उम्र की तरफ से और हमारी तह और लेवल की तरफ से, तो हम सीख सकते हैं। अगर इसमें व्यवधाएं और बाधाएं अड़चनें आती हैं तो हम सीखने में कामयाब नहीं हो सकते। ट्रांसलैंग्वेजिंग टॉक्स अबाउट translating the language from one to another, and if we regularly do that, it provides us opportunities. As for example, आप कैसे हो? If I say in Hindi, how are you in English? And if I say, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ in Nepali? म ठीक हूँ, I am fine. म ठीक हूँ in Nepali, I am fine in English, and मैं ठीक ठाक हूँ in Hindi. This type of small sentence structure also make us learn language easily because slow and steady wins the race. Similarly, हम भाषा सीखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में पूरी भाषा को सीख जाएं। इसमें हमको नियमित रूप से भाषा सिक्न होगा। यसको मतलब यो हो कि हामी भाषा सिक्न चाहन्छौँ र तर एकै दिनमा हामी सबै भाषा सिकौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो भने हामी सक्दैनौँ। यसको लागि हामीले बिस्तारै बिस्तारै सिक्नुपर्ने हुन्छ। So I talked about the theories. Now let me talk about the benefits. Studies show multilingual brains have better focus, stronger connections between brain regions, and slower cognitive decline with age. So when we learn multiple languages, our brain gets activated and it also gets connection with brain regions, and we can achieve our recalling power, memory back. अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी चीज को देर तक समझे रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग के विभिन्न और विविध जगहों पे सही तरह का इसका प्रसारण हो, और हम चाहते हैं कि हम किसी भी एक चीज में फोकस करें, तो हमको
मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज और मल्टिलिङ्गुअल होना जरुरी है। यदि हामीलाई चाहिन्छ कि हामी धेरै भाषामा कुनै पनि चिजमा ध्यान एकीकृत अथवा एकीकृत गर्न सकौँ, केन्द्रित गर्न सकौँ र दिमागका विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्ट्रङ सम्बन्ध बनाउन सकौँ र हाम्रो बोल्ने क्षमतालाई कम गरौँ भनेपछि हामीले धेरैभन्दा धेरै भाषा सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा स्टडीले देखाएको छ। There are some points, mental and cognitive benefits. So we can be mentally strong and we can recall the things for a long time, boost brain power, improves memory, focus, and problem solving skill. This is only possible by associating us with multiple languages. It doesn't mean that if you are just associated with one language, you don't have memory. Memory is there, but the expansion of memory and the elasticity of memory can be better gained by implementing multilingualism. यसको मतलब यो हो कि हामीले एउटा भाषामा मात्र दखल गर्दा हाम्रो मेमोरी सुधार हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल भाषामा दक्षता हासिल गर्यौँ भने त्यसको मात्रा ज्यादा हुन सक्छ, यसमा चाहिँ बढ्न सक्छ। इसका मतलब यह है कि अगर हम बहुत सारी भाषा में एक से ज्यादा भाषाओं में दखलता हासिल करते हैं तो हमारे सीखने के, समस्या समाधान करने के, दिक्कतें सामना करने के क्षमताएं वृद्धि हो जाती है। Delays mentalizing can slow cognitive decline and lower the risk of dementia. So when we people learn different languages, multiple languages, then there will also be cognitive decline, and there will be slow cognitive decline because it will have the benefit. And if we are engaged in language learning, multiple language learning, it will impact positively to our forgetting process as well, because we can remember the things for a long time. So it is proven. यदि हामी मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज सिकेका छौँ भने हाम्रो चाहिँ बिर्सने सक्ने कुराहरू हामी जो सम्झिन्छौँ त्यो कुरा सम्झिरहन्छौँ र डिक्लाइन हुँदैन त्यो पावर, र रिस्क पनि त्यो चाहिँ बिर्सने हरेक कुराहरू हामी बिर्सिरहेका हुन्छौँ एजको बढ्ने क्रममा यो चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजतिर समन्वय राख्नुपर्ने अथवा सिक्नुपर्ने देखिन्छ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग के सोचने की क्षमता बढ़े और हम चीज को न भूलें तो हमको मल्टीपल लैंग्वेजेस और मल्टीलिंगुअल होना जरूरी है। Enhances multitasking. Switching between languages strengthens mental flexibility. So what do the people do? Great people. I can just take an example of the person who just provide or who are just engaged in conferences, workshop. When they see the people from different background and different demographic, we can say demographic area, they use the language based on their audience. I also I just could get the time of listening to the speech of Barack Obama when he was there in India on the occasion of the celebration of Republic Day. He was telling, "Bade bade देशों में." So he was telling आप कैसे हो, like that. This so many things. So what is that? That is the connection. So it enhances multitasking. Suppose that many of the people in India can help him and it will enhance the task. Not only single task, he will be doing many tasks because he or she has the knowledge of multiple languages. So it increases mental flexibility. यसको मतलब यो हो कि यदि मान्छेलाई धेरै भाषाहरू आउँछ भने उसमा त्यो दक्षताले
उसको काम गर्ने क्षमता बढ्छ। एउटा कुरा नेपालीमा राम्रो कविता लेख्छ भने त्यो व्यक्तिले अङ्ग्रेजीमा पनि राम्रो कविता लेख्न सक्छ, अङ्ग्रेजीमा राम्रो लेख्छ भने नेपालीमा पनि लेख्न सक्छ, त्यस्तै हिन्दीमा पनि लेख्न सक्छ। त्यो कुरा के हुन्छ भने भाषाको समानता अनुसार जोडिएको हुन्छ, इट इज कनेक्टेड। त्यसैले मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजमा मेन्टल फ्लेक्सिबिलिटी बढाउनुको साथसाथै यसले चाहिँ मल्टिटास्किङ यानि कि धेरै कुराहरू कामहरू गर्ने कुरामा बढावा दिएको हुन्छ। Improves learning ability, makes learning new skills or subjects easier. So if you are having the power to learn multiple language, and if you are having the grasp of multiple language, you can have the knowledge of subject matter and it makes learning easier. यसको मतलब यो हो कि यदि हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ, धेरै भाषाहरू सिकेका छौँ भने यसले हामीलाई नयाँ सिपहरू र नयाँ भाषा सिक्नलाई सजिलो बनाउँछ। जस्तै हामीले कुरा गरौँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको, यदि हामीलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आउँछ र एउटा कुरा गरौँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जानेको मान्छेको, अनि अर्को कुरा गरौँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नजानेको मान्छे। अब तिनीहरू दुइटैजना व्यक्तिहरूलाई के भयो त स्कलरसिपमा उनीहरू चाहिँ विदेशतिर पढ्न गए। नाउ इमेजिन द्याट दोज पर्सन, two persons, one having the knowledge of English language, another not having the knowledge of English language, but bound to go abroad to study further. So what do you think? The first person will get or second person will get the chances? Truly, the first person will get the chances because he has the language command already. इसको मतलब ये होता कि इसका मतलब ये है कि जब हम भाषा में दखलताएं और दक्षता रखते हैं तो अवसरें अवश्य प्राप्त होगी। सोशल एन्ड कल्चरल बेनिफिट, सामाजिक र सांस्कृतिक फाइदाहरू पनि छ। सामाजिक और सांस्कृतिक फाइदाएं opens cultural doors, allows deeper understanding of traditions, humor and values. Cultural doors also support that if we have similar cultures and if we have the understanding of that culture, we can easily adjust there and assimilate there. But if we are not known about the culture, we will be talking against of that culture, which will be indirectly harming us. इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी सांस्कृतिक मान्यताओं और सामाजिक मान्यताओं में जानकारी रखते हैं तो हमें उस जगह पे एडजस्ट होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर हम इसमें कोई भी दखलता नहीं रखते, हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम इसी संस्कृति और सामाजिक परंपराओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा, एक तो उस संस्कृति और उस सभ्यता के लोगों के साथ हमारी दुश्मनी होगी, दूसरा हम उस जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। यसको मतलब यो हो कि भाषामा यदि हामीले त्यो जानेका छौँ संस्कृतिको बारेमा, समाजको बारेमा भने हामी सजिलै एडजस्ट गर्न सक्छौँ। तर यसको अलावा यदि कुराहरू हामीले जानेका छैनौँ तर हामी भन्छौँ कि यो ठिक भएन, यो ठिक भएन, यसको मतलब के हुने भयो त? यसको मतलब यो हुने भयो कि हामीलाई त्यो संस्कारले, त्यो समाजले, त्यो संस्कृतिले बाइकट गर्ने भयो अनि हामी एक्लो हुने भयौँ। ह्युमन भ्यालुहरूको हामीले सम्बोधन गर्न नसक्ने भयौँ, हामीले बुझ्न नसक्ने भयौँ। कारण के भयो, भाषामा दखलता नहुनको कारणले गर्दा त्यो समस्या भयो। त्यसैले we must have the knowledge of multiple languages. Builds empathy, helps see the world from multiple perspectives. So helps see the world from multiple perspectives. Here we can just relate this with the incidents. If someone is just needing or seeking help in some of the area where there is nobody and he doesn't have the language knowledge, but he wants to be helped, in such a time, he will not get help because he doesn't have language mastery. But instead of that, if that person has the knowledge of the language, he or she can get it very easily because the core meaning can be conveyed by the language, only that language, with the person being helped and with the person giving help understand. यसको मतलब यो हो कि भाषा बोल्ने भनेर एउटा अङ्ग्रेजी नजानेको मान्छेसँग अङ्ग्रेजी बोलेर काम छैन।
त्यस्तै हिन्दी नजानेको मान्छेसँग हिन्दी बोलेर काम छैन. It must be associated with the context and person. And if we are contextual speaker and trying to switch our language according to the context and according to person, then only we can be multilingual. कसैले बुझ्दैन अनि त्यसमा हामीले अङ्ग्रेजी बोलेर काम छैन, कसैले बुझ्दैन त्यसमा हिन्दी बोलेर काम छैन. त्यसैले हामीले सबभन्दा पहिले परिवेश, सन्देश र त्यसको उद्देश्य बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल हुन्छ. इसका मतलब यह है कि परिवेश के मुताबिक, परिवेश के अनुसार आप लोगों को भाषा बोलना होगा. अगर एक बंदा हिंदी बोलता है तो उसके साथ हिंदी बोलना होगा. अगर वो इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश. इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी बोलने वालों के साथ अंग्रेजी बोलो, इंग्लिश बोलो और इंग्लिश बोलने के साथ हिंदी बोलो. इसका मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू बी stupid, so we should not do that. Strengthens communication, expands your ability to connect with diverse people. Connecting with the people is only the means of communication. Communication is first means of connecting with people. Connection, coordination, and cooperation is possible by communication. Imagine you are traveling by air and there are people from different countries. They know only English, but you know only Nepali or Hindi. Imagine, will you be able to tell something to them? No. You will be sitting there deaf and you will be listening and looking here and there. But if you can converse well with them, either in English or some other language that they understand, then your journey will be very good and you will be connected with that people. So we must be, or we can use that benefit also in multilingualism. Encourages adaptability. I have already told that if we are having the knowledge of language, we can adjust in new places very well. But if we are lacking it, it takes time. इसका मतलब यह है कि भाषा में दक्षता है तो बहुत सारे जगहों में हम एडजस्ट कर सकते हैं और स्थापित हो सकते हैं, मगर उसमें हमको भाषा बोलने वाले लोगों के साथ कनेक्शन, दैट मीन्स कैन से इमोशनल कनेक्शन, वी कैन कम्युनिकेशन. आई थिंक देयर मस्ट नॉट बी कम्युनिकेशन बैरियर, ये होना चाहिए. Now, professional and economic benefit. Professional and economic benefits are there. We are just seeking the audience. So when the great scholars come for the conferences, they just look the audience. Suppose that if we can give an example of Barack Obama, when he was there in India, when he was there in the Republic Day, on the occasion of Republic Day, he was just delivering his speech, and he was just using the, you know, very nice words like "bade bade देशों में." So he was talking about that thing and how are you like that, kaise ho like that. Very simple words, but they have meaning because when people want one type of respect, many people want respect because they want their language to be spoken because it connects the heart. And when the people are associated with heart, that type of relationship, connection can last longer. So words, languages can create that. यसको मतलब यो हो कि यदि हामी कुनै भाषामा कुनै आत्मीयता चाहन्छौँ भने सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको त्यो भाषा हो. हामी चाहिँ कुनै पनि देशमा हौँ, यदि त्यहाँ हामीले हाम्रो भाषा बोल्ने मान्छे पायौँ भने we forget everything. We think that he is our near and dear person, he is our close relative. जब हम किसी भी देश में हैं और उस देश में हमको अपना भाषा बोलने वाला आदमी मिल जाता है, तो चाहे वो आदमी हमारे देश का हो या नहीं, अगर उसने भाषा सीखा है, हमसे बात करता है, तो हमें लगता है कि वही आदमी हमारा अपना आदमी है. तो इसमें इस प्रकार का बॉन्ड स्थापित हो जाता है. करियर एडवांटेज. Bilingual or multilingual candidates often stand out to improvise. So भाषा के knowledge कितनी है? How many languages you can communicate is one of the questions. बहुत सारे लोगों में एक ही भाषा बोलने की क्षमताएं होती है. अगर आप एक भाषा बोलते हो तो आपको अवसर और अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने के चांसेस बहुत कम है.
But if we are speaking more than one languages, 2 or 3 languages, then we can communicate well, and there are some of the opportunities which will be following us. यसको मतलब यो हो कि यदि हामी भाषामा अलि राम्ररी दखल राख्छौँ भने हामीहरूलाई कामको लागि के गरौँला कसो गरौँला भनेर खासै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन, बिकज वी हेभ द वेपन. वेपन मिन्स दिस इज नट किलिङ वेपन, इट इज गेटिङ वेपन. वेपन भनेको मैले भाषालाई भन्न खोजेको हो. भाषाको माध्यमबाट हामीले जब हन्ट गर्न सक्छौँ. जब अब हामी चाहिँ सिक गर्न सक्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ. दिस मिन्स दैट अगर हमारे पास भाषिक क्षमता है तो उसके माध्यम से हम फर्क फर्क जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद हमें नौकरी भी मिल सकती है. ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आर देयर, मोर जॉब ऑप्शंस इन टूरिज्म, ट्रांसलेशन, डिप्लोमेसी एंड बिजनेस. So nowadays people are seeking translators. Even though we have AI translators, but it cannot be 100% true, and there may be many hindrances also. People may not think what is exact translation. So only the people can translate it if they have the knowledge of multiple languages. यदि धेरै भाषाको नलेज भयो भने मात्र मान्छेहरूले एउटा भाषालाई अर्को भाषामा ट्रान्सलेट गर्न सक्ने हो, र यसको लागि पनि धेरै जागिरका चान्सेसहरू छन्. अगर एक आदमी को टूरिज्म में, ट्रांसलेशन में, डिप्लोमेसी में और बिजनेस में, व्यापार में काम करना है तो उसको विभिन्न और फरक फरक प्रकार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. तो इसके लिए मल्टीलिंगुअलिज्म का बेनिफिट में एक ये भी है. बूस्ट क्रिएटिविटी एट वर्क, एक्सपोजर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पार्क्स innovative thinking. Innovative thinking is possible by multilingualism or by developing multilingualism because it boosts creativity of people. Suppose that if you are the leader in one of the organizations, if you are speaking more than 3 or 4 languages, the person who are working under you will be impressed by your way of speaking in multiple languages because they will have one type of connection. But if you are only speaking English, you don't know Hindi, you don't know other languages, you don't know Nepali, so those people will be working under you, will not be connected with you. यसको मतलब यो हो कि खासै गरेर ती व्यक्तिहरूले काम गरे पनि आफ्नो भाषा, त्यसै प्रकारको संवाद, विभिन्न दिनमा जसरी चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यो कम्युनिकेसन तिनीहरूले बुझेनन् भने तपाईँको वर्डले र तपाईँको कमान्डले मात्र एउटा भाषामा त्यति राम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी नहुन सक्छ. इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी कंपनी में भी जो मालिक है और मैनेजर है वो अगर बहुत सारे भाषाओं की दखलता रखता हो तो वो आदमी बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर सकता है. इसमें उत्पादकत्व बढ़ सकता है, उत्पादनशीलता, उत्पादन, कंपनी का उत्पादन बढ़ने में मदद हो सकता है और साबित हो सकता है. That means it may be very good for increasing the productivity. Better negotiation skills, understanding another language gives insight into how people think and express themselves. So language gives us power it gives us power to think about how people think. Language gives us power about how people think means thinking about thinking. इसका मतलब यो है कि हामीलाई कसरी मान्छेहरूले सोच्छन् त भन्ने कुरा सोच्नसम्म पनि मल्टीलिंगुअलिज्मले धरातल कायम गर्छ. अगर हम चाहते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म से इसका जवाब भी हमको मिल सकता है. So now question is there, how to learn? So we can learn multilingualism, or we can be multilingual, but question is there, how to learn? Start with one strong base. That means you must learn one language first. Master one new language to at least an intermediate level before adding another. So unless you are getting the mastery up to intermediate level, don't start another language because it will be the conflict between the languages if you mix them together. So you should have the time and you should try to learn one language. एउटा भाषा तपाईले इन्टरमिडिएट लेभलसम्म सिक्नुहोस्. त्यो भाषा इन्टरमिडिएट लेभलको तपाईले
सिक्नुभयो भने त्यसपछि अर्को भाषा तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अगर आपको बहुत सारे भाषा सीखना है तो पहले एक भाषा को प्राथमिकता देनी होगी, और एक भाषा को इंटरमीडिएट तौर पर अगर आप ले जाते हैं तो उस वक्त आप दूसरी भाषा को भी शुरुआत कर सकते हैं। A strong foundation in one makes learning others easier, especially if they are related. I have already talked about similarities and differences, and if the languages are similar, it is very easy to learn, and if they are different, then it takes time. Similarly, यसको मतलब यो हो कि यदि हामीले कुनै भाषामा समानता छ भने छिटो सिक्न सक्छौँ, अलिकति असमानता छ भने टाइम लाग्छ, तर यसले चाहिँ आदत चाहिँ बनाउँछ। मेरा कहने का मतलब है कि अगर भाषा में समानताएं हैं तो ये जल्दी सीखी जाती है, मगर इसमें असमानताएं हैं तो इसमें टाइम लगता है। Use multiple learning channels. We have listening channels, podcasts, songs, TV shows, YouTube, and we have speaking language exchange partners, online tutors speaking to yourself. And for reading, we have simple news, graded readers, children's books, and writing journals, social media posts, or small translate. These are all the means of enhancing language, multiple language. आपको मैं बता रहा हूँ, लिसनिंग के लिए पॉडकास्ट, सॉन्ग्स, गाने, टीवी शोज, यूट्यूब है, और बोलने के लिए लैंग्वेज एक्सचेंज पार्टनर्स, ऑनलाइन ट्यूटर्स भी अभी उपलब्ध है। किसी भी भाषा को सीखना है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर भी प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों से। स्पीकिंग टू योर सेल्फ, यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस एंड यू कैन ट्राई टू लर्न एवरी डे। आप प्रत्येक दिन, हर एक दिन एक भाषा सीख सकते हो। रीडिंग सिंपल न्यूज, ग्रेडेड रीडर्स, चिल्ड्रन बुक, आप पढ़ भी सकते हो हर एक दिन में, और राइटिंग आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से आप किसी भी भाषा को सीख सकते हो। प्रैक्टिस डेली इवन इन स्मॉल डोजेस। 15 to 30 minutes for language is better than cramming once a week. So you are not going to learn overnight. For that, you should have the schedule and learn 15 to 30 minutes a day. We have some of the apps now, Duolingo, LinkU, Anki, or sticky notes around house. You can learn that. तपाईहरु ड्युलिङ्गोबाट, लिङ्क्यूबाट, एङ्कीबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, तर यसको मतलब 15-20 मिनट अथवा 15 देखि 30 मिनटसम्म डेली हो। तर एकै हप्तामा मैले चाहिँ सबै सिक्दिन्छु, कोरियन पनि सिक्छु, चाइनिज पनि सिक्छु, हिन्दी पनि सिक्छु, र अर्को हप्तामा म चाहिँ मास्टर हुन्छु अनि त्यसपछि पढाउँछु भन्ने कुरो चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले स्लो एन्ड स्टडी विथ द रेज भने जस्तै तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै सिक्न सक्नुहुन्छ। अगर आप चाहते हैं कि भाषाएं आपको पसंद है और आपको सीखना है तो 15 से 20 मिनट तक हर एक दिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा। इससे आपकी भाषा में रुचि भी और इच्छा शक्ति और इरादा पक्का हो जाएगा। और वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाहा वहां रहा, कहते हैं लोग। आपका ये चाहा भी पूरा होगा। Use the teach back method. Teach someone what you have learned. It forces your brain to recall and reorganize or organize the knowledge. So if you are teaching somebody about the language, it will just make you remember language very well, and it makes it to remain long lasting. जब आप किसी भी भाषा को पढ़ाते हैं, शिक्षण कराते हैं, तो उस भाषा में आपको दखलता है और उस भाषा में आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है। इसके लिए आपको किसी आदमी को, और आपने से कोई सीख रहा है और सिखारू है और अभी अभी किसी भाषा को शुरू कर रहा है, तो आपको उसको सिखाना होगा जिसमें आप आपने सीखने वाले भाषा में अच्छी तरह से बोल पाते हैं। यदि तपाईलाई कुनै भाषा सिकाउनु छ भने पहिला तपाईले सिकिसकेपछि अरूलाई सिकाउनुहोस्, बल्ल चाहिँ तपाईले त्यसमा दखलता अथवा त्यसमा दक्षता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। With this, I have finished today's multilingualism